Hey guys, welcome again. I hope I am audible and visible. Okay. Uh, okay, so I hope you guys had a quick water break, right? So we can start again. So again, I mean, just a quick update, guys. Anybody has any questions from whatsoever we discussed so far? Again, please feel free to ask me your questions, you know, so I can take questions as many times as you want. Okay, but again, the important thing is at the end of the session, you should be aware of what I'm talking. That's most important. Cool. Again, so let people join in, so they'll keep on joining in. So meanwhile, we can have the quick introduction again. Again, I mean, if anybody has any question, please do let me know that. सुमंत यार लिंक्डइन आईडी तो मैंने पोस्ट किया था लास्ट चैट में, एक बार मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ. Okay, so here you go. This is my LinkedIn ID. Cool. So let's start. Great, guys. So as you know, my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I've been in the industry for almost 9 years now, and since then I'm working, and I've been into multiple domains as I've already mentioned. So I was in a cloud domain. I was working for a bank earlier. Then I'm right now in telecommunication. Before this, I was in automobile sector, manufacturing side. Right, so I've been into different industries, so that's again the beauty of being into data science, guys. So that opens up a lot of opportunities for you. But again, at the same time, it's tricky to cope up with the multiple domains at the same time, because there are certain jargons and certain hidden things which you do not know, which would always take time to understand from the domain, right? So when I say a domain, so I do not mean that domain is of no importance here, but definitely domain is of importance. But again, being a data science guy, you have a kind of invisible immunity towards domains. Okay, so you can work in multiple domains. I mean, for example, a finance guy can still get a job in a healthcare sector, likewise, if he is a data science guy. So because you're working on data at the end, right? And that's where we understood that being a data science, there are certain requirements, prerequisites. So Python and SQL being the prominent ones. So they both are equally important, Python and SQL. SQL or SQL, guys, whatever you call them as. So it's fine. I call it as a SQL. So Python and SQL, they both are equally important. And that is the reason why we have started with both of them. So we've started Python about a month and a half ago, and we have done a lot of things. So we are talking about the data science aspects of Python as well, but again, Python as a general too. So you can always follow that playlist separately, but again, here in SQL we'll be talking about only on SQL in this web series. So again, in SQL we started in very basic. So we started yesterday itself, and we covered the basic DDL, DML techniques and all that. So basic one. So again, in this lecture, I'm gonna be finishing up the things quite quickly, and I want to at least show you the environment of MySQL Workbench. I believe, as I mentioned earlier in the last section, last lecture yesterday. So I would expect you to have MySQL Workbench setup done at your place. If you have any issues in setting up the Workbench, do let me know. I have a document prepared, right? So I can share that document with you, maybe offline, or I'll try to upload it in the description of the video. I don't have it right now, but I mean I have it offline with me, but I don't have it uploaded on the description. So I'll get it uploaded in the team if you want it. But again, I believe it should not be a major issue. I mean, setup is just an easy thing. But again, try to set up a local connection on your MySQL Workbench, and if you do that, right, so we can always have we have a few, I mean, 2-3 databases by default, like Sakila. If you set up the by MySQL DB, right, so you'll get one database by default. Name is Sakila, Sakila. So that is a very good database. It has all the information regarding movies and all. So we're going to be doing a few things there. So that's a good by default database. And again, we can create one more database. I have a query prepared. So that's an online available query. Again, everybody uses that, right? So it's a company kind of an database, so we can prepare that as well.
Okay, cool. So we have quick questions. Mahavir said, is there any online IDE for SQL? यार होना तो चाहिए. मैंने ऑनलाइन मैंने कभी करा नहीं है, बट आप मिल सकते हैं. वैसे W3 Schools करके एक वेबसाइट है. W3 Schools is a very good website. I mean, to answer your question, Sumant. So W3 Schools is very good for SQL to study, I would say, in that sense. But again, it's your choice whenever, howsoever you want to study. एंड प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आई थिंक W3 Schools प्रोवाइड करता है ऑनलाइन आईडीई, बट अगेन आई डोंट, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव व्हेन यू से ऑनलाइन आईडीई. सो यू वांट टू यूज योर ओन डेटाबेस एंड देन यूज इट. सो I mean, it depends what is your objective, but again, yeah, you can get some online IDs as well, but it's okay, na? So why can't you install MySQL Workbench? It's free, so you can download it and then you install it in your own laptop. Set up, just do a quick setup. It's quite easy. It's not difficult. It's always easy to have something on your own system, right, to run, because it gives you the flexibility to learn as well. Yeah. So again, I think I answered your question also, Sumant. Cool. I think that's pretty much it. So okay, coming back to the quick promotion, guys. So you know this is mandatory. I have to take care of this. So Relevel, as you know, just bear with me for some time. So I'll quickly finish this up. Okay, so as you know, Unacademy has launched the Relevel as a platform, so which is a tech hiring platform. Okay, so and there are multiple reasons we have actually felt that candidates do miss out on the opportunities. It could be like, you know, they don't have the right degree from a tier A college, so like IITs and IITs and all that. So for the engineering guys, you know, the importance of IITs, right? So likewise, people do feel that they don't have the right degree, so they don't have the degree from the right college, or they don't have the right networking, so like they don't know the right set of people. So that again could be one potential reasons for them to not get selected. And also there could be reasons like the resumes are not getting shortlisted. So maybe, you know, your resumes, because there are 100 other applicants along with you, right? So there could be some issues in your resume. And in fact, if everything, even though everything is fine, you still might not get the shortlistings done, right? So these things are beyond your control. And based on this, you are actually missing out on the great opportunities. And also you're maybe applying for, say, n number of jobs, say 10, 20, 50, 60, 100 odd jobs, still you're not getting the calls, right? So yeah, that's a very practical scenario, and people do miss out on the opportunities for that. But again, that is the reason why Relevel has been introduced, guys. So it's India's first tech hiring platform unveiled by Unacademy, which is actually helping the job seekers to get their dream job. So here, basically, you are only dependent on your skills and talent. Okay, so it's more of an assessment platform. So depending on the choice of your portfolio, you're supposed to go through an assessment. Okay, and based on this assessment score, you'll be getting the interview call. So basically, internally, this Relevel platform has tie-ups with multiple organizations, so which are hiring directly from the Unacademy platform. And once you give the test, right, so a report card will be shared with these companies internally, and based on your assessment score, they'll be reaching out to you. So this is purely dependent on your skills and talent, your knowledge, and there's no relation with the college you have been part of, or no connection with the set of people, you know, right? So it's purely on your individual skill. Okay. And apart from this, there are certain other benefits also involved in participating in the Relevel as a platform, guys. So as you know, so there, as I've said, so there are 50 plus companies which are part of a Relevel platform who are hiring from the Relevel directly. And there are like, I mean, these companies include the startups as well as the unicorns like ENY, Upgrad, Razorpay, Cred, Urban Company and all that. So these are directly hiring from, and there are many more such companies. In fact, they are directly hiring from Relevel. So you can definitely leverage this benefit, right? So it's more of an assessment platform where based on your skills, they will be calling you instead of you hunting for them, right? And as you can see, there are 1,000 plus open job positions across 3 different portfolios right now. Business development, front-end development, and back-end development, right? So so these portfolios are the ones which are actually running live right now, and there are multiple roles available within these portfolios. So based on your particular interest area, you can actually get the right job for you. So you can select it, and then based on that, you can be part of the assessment program. And the good thing is this is completely online, so you can take it from the comfort of your home based on your availability and the best mental shape. And also the good thing is it is for completely free. Okay, so this test is completely free. There's no money involved in this.
Yeah, it's a beta platform, so they have just launched it. There might be few charges later on, but right now it's completely free. Okay, so and the only thing which you have to take care of is like you have to finish your test entirely in a single day. Okay, so you have to you can choose the date of your choice, but again there are certain rounds. So if once you sign up, you'll get the details. So technically, I believe there are 5 rounds. So and you have to take, you're expected to take all these 5 rounds in a single day's time. So that's the only expectation. And once you have given the test, right, so you'll get your report, Relevel score within a week's time. Okay. And once you clear the test, guys, with a qualifying score, so you will be able to create an amazing candidate profile, which will help you showcase your skills and stand out from the crowd. And something that stands out is always noticed by the companies. You can just think of that, right? And to get the Relevel profile, so the candidate has to score more than 700 marks. So basically the qualifying score is 70%. So assessment is of 1000 marks. So the qualifying criteria is 700, and after, the more the merrier, right? So you have to score as much as you can, but 700 is a qualifying criteria, right? And the good thing is the candidates can take the test a number of times, but again, the reattempt of the test will only happen after 30 days of your first attempt. Okay, so there is a time gap of 30 days. So you can only reattempt after 30 days of your first attempt. Okay, and again, if you do not meet the qualifying criteria, right? And also there are some exciting rewards involved here. So the candidates will be rewarded with some exciting goodies like MacBook, iPhone, and many more such prizes, and depending on the highest rank holders for a particular category in a month. So the highest rank holders will be rewarded with some exciting goodies. So with Relevel, basically you are in a unique position, guys, to invite the interest from the companies instead of you hunting for them. So it's basically the vice versa situation. So once you have given the assessment, right, so just sit back and relax, the companies will reach out to you. Okay. And the signing up on this platform is also quite easy, guys. So it's just a Relevel platform, relevel.com. So you know the website. So just sign up on this, and once you do that, you will be expected to choose the select the test of your choice. So based on the portfolio, like business development, front end, the back end development. As you can see, there are multiple roles available within these, like the customer engagement associate, relationship manager under business development. You have Angular developer, web developer, and front end. And the backend developer has the data engineer, research engineer, backend engineer, and all that, right? So these are some good openings and good salary payout as well, and a number of jobs available inside these positions, portfolios. So you can definitely choose a test of your choice based on your interest. Once you do that, the next thing it will ask for your slot. So basically, yeah, these slots are limited, so do not wait. So please try to book it as soon as possible, right? And yes, Rahul, is completely free, so you can book it at your own choice. Okay. I'll come to the other questions, Pooja and Gajanan. So once I just finish this, so basically, yes. So yeah, you can choose to select. You can choose a test of your date of your choice. So once you have done that, right? So you should be mentally available on these dates, right? And then the last thing which will ask is to create the neat video resume. Okay. So video resume is like all about talking about yourself, right? So what you have done so far, what is your goals, and what are your achievements, and why company should hire you. So talk about yourself in almost 30 seconds to 3 minutes of a video, and talk about your accomplishments, right? So and obviously, since it's a video resume, recorded one, so you have to be in a good environment, no noise, good lighting, and all that, well groomed, so basic etiquettes, right? And once you have submitted this, so that's it. So you have to just wait for your D day, so which is your examination day. And then once you have done that, so just give your best shot, right? So register for the Relevel today, guys. You have the website relevel.com, and it's for completely free. So at least there's no harm in at least trying once, right? So just take it for at least once and just see how it is benefiting you, right? And yeah, so as you know, so we have an official Telegram channel as well. So you have the link right there in the description of the video. So you can join this. It's a one-place talk for you to all your queries. So like what shows, what time, and all that. So you get the updates there. Okay. Yeah. As I have mentioned, do not forget to like, share, and subscribe, guys. So if you feel that you're getting benefited, do feel free to motivate us as well. So that's the bare minimum I'm asking. So yes, do feel free to push the like button. And if you feel that you're getting benefited. Cool. So yep, so we have into SQL. So we have done quite a lot of things. We have seen all that, alter, DDL, DML done है, इसमें कोई issue नहीं है. Operators हम देख रहे थे, where, correct, select
और वेयर में किसी को कोई इशू है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, व्यू टेबल की जो हम बात कर रहे थे, किसी को कोई इशू है उसमें, हमने लॉजिकल का देखा था, लॉजिकल के कुछ क्वेश्चंस भी करे लॉजिकल में यहाँ पे ऑन द एंड और एंड नॉट, राइट। किसी को भी कहीं पे कोई इशू है, प्लीज डू लेट मी नो बिफोर आई जंप टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। सो वी हैव डन व्हाट, फिल्टर ऑपरेटर एंड वी हैव डन द लॉजिकल ऑपरेटर। फिल्टर में वी हैव वेयर, लॉजिकल में वी हैव एंड और नॉट, है ना। सो ये हमने ये चीज करी, बट अगेन अल्टीमेटली फिल्टर ही कर रहे हो आप, है ना। सो वेयर के ऊपर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा रहे हो, करेक्ट। चलो इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे। इसके इसके अब तक कोई क्वेश्चन है गाइस? आई एम गोना गिव यू 30 seconds, so if you have anything to ask me, so meanwhile I'll take the other questions. Pooja says, how many days it will take this course to complete full SQL? Yeah, I mean, why you want to talk about the days, है ना? So my question is, my objective here is to complete the entire thing as soon as I can. But again, if it takes, if there are so many questions to practice, it might take time, right? So it all depends. So I'm all ears. So if you, if nobody asks any questions, I can cover it in a 2 weeks or 3 weeks of time. There's nothing much. I mean, once I finish up with my slides, right? So there's nothing, there's no concept left beyond that, right? It's more of practice, right? So practice to never ending, yeah. So as many questions as we solve, more comfortable you will be, guys. So if you want me to finish it like next week, I can do that, right? So finishing is not an issue for me, but I mean, if you won't practice, you won't understand it. So I want to solve as many questions as I can. So that's where this how many days wala question is invalid for me, okay? So days, basically concept wise we are almost done. So there's I can finish it in a day or two. So the concept basically ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, but again it's all towards your practice, because छोटी छोटी चीज़ें practice से निकल के आती हैं ना. I cannot add everything in the slide. I mean, that's impractical, है ना. So वो practice से ही समझ में आएगा. I hope I answered your question, Pooja. Please do again let me know if I didn't. गजानन से सीक्वल सिखाने जॉब मिल सकता है, और कौन सा? अच्छा, सीक्वल सीखने से कौन सा जॉब मिल सकता है बेसिकली आप पूछ रहे हो. ओके ओके, या सीक्वल, सिर्फ सीक्वल बोलोगे, देयर इज नथिंग एल्स यू नो. सो डेटाबेस का ही जॉब मिलेगा ऑब्वियसली. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मिल सकता है, डीबी एडमिन, और आई डोंट नो. सो आई मीन मे बी टुवर्ड्स, या डेटाबेस रिलेटेड जॉब भी मिलेंगे यार. सो I would recommend कि सिर्फ SQL मत पढ़ो. SQL एक एडिशनल स्किल सेट होता है, I would say, है ना. सो SQL के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आप करना क्या चाहते हो. लाइक वी वांट टू बिकम अ डेटाबेस गाय, राइट. कंप्लीट डेटाबेस ETL करना चाहते हो. ETL आई थिंक यू नो, राइट. सो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड. सो अगेन वेयर हाउसिंग का पार्ट हो गया, टूवर्ड्स योर डेटा मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, एंड ऑल दैट. सो दैट इज वेयर SQL इज मोस्ट प्रोफाउंडली यूज. बट अगेन सिर्फ SQL नहीं, अगर आप ETL देखोगे तो अगेन ETL में अलग टूल्स इन्वॉल्व हैं, right? So सिर्फ SQL, I would say, is not a very alone. SQL is not a very good thing to have, but again SQL combined with other thing is the deadly combination. So for example, data scientist का मैं बता देता हूँ. Data scientist जिसको SQL अच्छे से आता है ना, I mean he is a gem of a person, है ना. So likewise SQL के साथ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सिर्फ SQL I would recommend कि इस पे सिर्फ SQL मत रखो, कुछ और भी पढ़ो. बट उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा करना क्या चाहते हो आप. इज देयर एनी प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस SQL? हाँ ना, बिल्कुल है. सो W3 स्कूल्स है, Geek for Geeks है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन प्रैक्टिस SQL. यू कैन गेट द क्वेश्चंस. एंड इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ, आप MySQL वर्कबेंच डाउनलोड करो, सेटअप इन योर ओन सिस्टम. MySQL वर्कबेंच गिव्स यू 2 to 3 databases by default. Okay, very good databases. They are very engrossed. Okay, and in fact I'll give you I'll be sharing one more schema with you, you know. So you can use that, and I can give you guys a list of questions. Okay, you can just keep on practicing. You can do that, but again we'll try to solve as much as we can in the class. Cool. ठीक है यार महावीर, let's start. Meanwhile लोगों के जो क्वेश्चन होंगे विल टेक दैट. लॉजिकल ऑपरेटर्स में किसी को कोई इशू नहीं है. रोज कॉलम्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्यू टेबल्स में, है ना. लेट्स जंप अहेड. सो आफ्टर लॉजिकल में के अंदर, यार क्या कर दिया. हाँ, लॉजिकल के अंदर ही हमारे पास सेकंड सेट है. एंड और नॉट के बाद हमारे ये डिफरेंट सिंबल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है. इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना. सो इक्वल टू सिंपल है, मतलब बेसिकली ये जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वी ऑल्सो यूज दिस. सो वी आर एनी वे यूजिंग इट. सो आपको पता है ना, वेयर में हम यूज कर रहे थे, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 101. सो
एग्जैक्टली वही सेम वैल्यू होना चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वेर इक्वल टू, लेस देन, नंबर्स में लेस देन आपका लेस देन अ वैल्यू होगा, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगेन नॉट, आई थिंक प्रदीप वाज सेइंग दैट, सो नॉट दो तरीके से लिख सकते हैं हम, सो नॉट, आई मीन एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन कंबाइंड, है ना? ठीक है, लेट्स डू दैट। सो we'll do it like this, and चलो अब now I have certain simple queries, so again I'll ask few questions, please आप मेरे को बताओ। नहीं, डबल इक्वल टू यार वो आपका पाइथन में होता है, सीक्वल में सिंगल इक्वल टू, ये क्रैश कोर्स नहीं कर सकता। क्रैश कोर्स क्यों करना है आपको? आप डाउट भी साथ में पूछो ना, डाउट सेपरेट करोगे तो क्रैश कोर्स का क्या मतलब? आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने आए हो यार, वो कॉलेज में चलता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलता है, ठीक है? सो अगर मैं डाउट सेपरेट कर लूंगा तो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, सो वी हैव टू टेक इट बोथ द थिंग्स सेपरेटली टुगेदर, ठीक है? चलो सैंपल क्वेरीज है हमारे पास, क्विकली गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक आपको टेबल वापस से दिखा देता हूँ, है ना? टेबल ये हमारे पास, आई हैव दिस टेबल, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, 101 102, आपको ये सब सैलरीज वालीज दिख रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर first name is equal to Arpit and salary is less than equal to 10,000. Quickly guys, how many rows, how many columns? Quickly guys, first question करेंगे, फिर उसको हम, आप अगर आपने ये रिस्पॉन्स कर दिया तो then I'm good. Amandeep says 1 row 1 column. Okay, anybody has any question? Mahavir says 1 cross 4. Okay, anybody has any other response? One row 4 column, 4 column, Amandeep says. Okay, yes, correct. Great. So thank you for realizing that, Amandeep, because we have star here, right? So star by default gives you all the columns, and we have 4 columns here, right? And we have a row ka criteria where first name is equal to Arpit and salary less than or equal to 10,000, right? लेस तो है नहीं, बट इक्वल टू वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू, करेक्ट? सो इक्वल टू है 10,000, सो मेरा एंड में ये बेसिकली ये क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा, and this true becomes the whole true, so it will give you the entire row. So basically one row जहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है? कूल, इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दो बाकी इजी है। लास्ट क्वेश्चन देखो गाइस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्टीवन एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 और एम्प्लॉय आईडी इन 101, 102। क्विकली, इसमें कितना रो, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल कम for the last question, guys? Two, Amandeep says 2 rows and 4 columns. Two rows and four columns. Okay. Okay. Mahavir says entire table. Interesting. Interesting. Okay. Partha says 2 rows and 4 columns. Okay. Okay. Now Mahavir also says 2 rows and 4 columns. Okay. I hope you kind of reevaluated your strategy, you think, Mahavir, right? Okay. Great. Great, guys. So I believe I don't need to explain this, right? So I think people are now understanding it. So how many rows and how many columns? Even though I added 2 conditions here and or, so this is evaluating first, this is evaluating second. So this entire thing, first name is equal to Steven, तो ये तो हमारे पास Steven तो है ही नहीं, हमारा सब भाई हिंदी का डेटाबेस है, हमारा कोई फिरंगी लोग काम नहीं करते हमारे पास। First name is equal to Steven and salary is less greater than equal to 10,000. So चलो ये भी meet नहीं कर रहा. So basically this whole thing is false, right? Now this false is getting evaluated on this or. So this whole thing is my left criteria for or, and the right is employee ID in 101 and 102. So this thing is false, it's fine, but or is true, right? So this will return the row IDs where 101 and 102 are there, correct? So this is how it is being evaluated. Any questions in this, guys? Any questions? ओके, ये बैच यार कल ही स्टार्ट हुई है अभी, मतलब हमने ये आज चौथा लेक्चर है हमारा। कल स्टार्ट करा था हमने सैटरडे को एट 10 AM, है ना?
इवेल्युएशन का राइट टू लेफ्ट होगा ना सर? नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट होगा ना यार। लेफ्ट, पहले मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट नेम इक्वल टू स्टीवन एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 को पहले हम सॉल्व किए, तब मेरा फॉल्स आया। देन फॉल्स केस अगेंस्ट में हमने और को सॉल्व किया, राइट वाला। सो फर्स्ट लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, है ना? चलो ठीक है, कूल गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, थैंक यू सो मच। चलो, सीक्वल ऑपरेटर्स लॉजिकल में किसी को इशू नहीं है? ये तो हमने बहुत ही कर लिया यार। ये क्या क्या पढ़ लिया हमने? लॉजिकल में एंड और पढ़ लिया, ये सिंबल विम्बल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? चलो ठीक है, ये भी देखो। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, आई वांट टू जंप टू माई सीक्वल वर्क बेंच। थोड़ा आज आज करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ वो एनवायरमेंट, है ना? वो जरूरी है, बिकॉज हम जितना ज़्यादा पीपीटी पर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, तो ज़्यादा लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। तो हम आज जंप करेंगे एक्सरसाइजेस पे, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे पढ़ा रहा हूँ अभी, बट आई वांट टू जंप टू माई सीक्वल वर्कबेंच। बट स्टिल एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, आप पूछ लेना बीच में, सो विल टेक दैट। ठीक है, सो चलो स्पेशल पढ़ते हैं। अभी हमने दो चीज पढ़ ली ना, हमने फिल्टर पढ़ लिया, फिल्टर में वी हैव वेयर, देन वी हैव लॉजिकल, लॉजिकल में वी हैव एंड और नॉट, और इसके अगेंस्ट में वी हैव सर्टेन सिंबल का ऑपरेटर, एंड देन वी हैव स्पेशल। सो स्पेशल में हमारे पास ये अगेन क्वाइट रीडेबल है, बिटवीन, लाइक, इज नल, इन एंड डिस्टिंक्ट। इसमें हमने इन तो पढ़ ही लिया है। इन तो बेसिकली एक रेंज ऑफ वैल्यूज को हम पास करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ वैल्यू, जैसे कि हमने इन 101 102 देखा, राइट? सो इन बोथ ऑफ दीज, सो बेसिकली रेंज को वो चेक करता है। एंड इन द स्टेटमेंट बिटवीन, सो बेसिकली चेक फॉर द वैल्यूज विद इन अ रेंज। आपका कोई नंबर का वैल्यू है, सपोज कुछ भी रेंज है ना, सो द वैल्यूज बिटवीन दैट रेंज, आप तब बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हो। like to check the values if it matches the pattern. So in fact I'll talk about like a bit more. So like में हम परसेंट भी यूज करते हैं to match the pattern. So I'll talk about like more, है ना? is null, basically if the value is null, so you check that if the value is null, you select. So basically, for example, select star for employees where employee ID is null, right? So you're saying that give me all the columns where employee ID is null. ये तो होगा ही नहीं, because प्राइमरी की है तो empty table रिटर्न हो जाएगा, है ना? So is null basically एक फिल्टर क्राइटेरिया होता है, चेक करने के लिए होता है, यूज कर सकते हो आप। इन अगेन आपको पता है रेंज में। डिस्टिंक्ट बेसिकली मतलब आपको अगर यूनिक वैल्यूज निकालनी है, सपोज फर्स्ट नेम में मेरे पास अर्पित है, अर्पित 10 बार रिपीटेड है ना, तो मेरे को सिंगल चाहिए, तो उसमें एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना? सो वो दैट विल रिटर्न द डिस्टिंक्ट। अब इसमें थोड़े अब कोड्स पढ़ लेते हैं, है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, सेलेक्ट स्टार। अब इसमें आपको आई वांट द आंसर फ्रॉम दिस, ओके? सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को सारे कॉलम्स चाहिए, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आई हैव 4 कॉलम्स हियर where salary between 10,000 and 20,000. So I'm saying now, instead of giving a particular value, I'm saying that give me all the rows where the values of my salaries is between 10,000 and 20,000. ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, वो सारे रोज रिटर्न कर देगा, बिकॉज हमारे पास क्या है यहाँ पे, सारे 10,000 और 20,000 के बीच में ही है, बाउंड्री कंडीशन भी लेता है, ठीक है? सो 10,000 एंड 20,000 सब रिटर्न कर देगा मेरे यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं है, करेक्ट? राइट पार्था, एग्जैक्टली। सो इट विल रिटर्न द होल टेबल बिकॉज आई एम गिविंग द एंटायर रेंज, है ना? अब नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक अर्पित। ओके, सो आई हैव गिवन लाइक कमांड हियर। लाइक क्या है हमारा? लाइक क्या करता है? चेक्स फॉर वैल्यू इफ इट मैचेस द पैटर्न, राइट? सो बेसिकली आफ्टर लाइक आई एम गिविंग अ पैटर्न, है ना? सो पैटर्न बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को वो सारा एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसका लाइक जो है अर्पित है, मतलब जो बेसिकली जिसमें वो मैच कर रहा है ये पैटर्न अर्पित। सो अभी मैंने पूरा कैरेक्टर पास किया, अभी मैंने पूरा एक सारे A to Z कैरेक्टर्स पास, मैंने कुछ भी मैंने बोला आइडेंटिकल मैच होना चाहिए, ARPIT शुड बी मैच, राइट? सो मेरे पास डेटा में आप देखोगे सिर्फ यहीं पे मैच हो रहा है, फर्स्ट रो में जहां पे ID 101 है। सो द आउटपुट विल बी दिस रो, राइट? 4 कॉलम्स दिस रो। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, सपोज आई वांट ऑल द टेबल, all the rows where the name starts with A, for example. Could be a question, right? So name starts with A. In that sense, what I would do is I'll use a special operand which is percent. Okay, so percent. मैंने यहाँ पे मैं एक मिनट रुको, मैं इस मैं ऐड करता हूँ. Just give me a minute. I'm editing the slide. ठीक है, विजिबल है? कूल।
So this is your slide now. So now this says that I want all the employees where the first name like a percent. So percent means after a anything is fine. परसेंट का मतलब होता है सब कुछ सही है, इसके बाद कुछ भी चलेगा, ये मतलब भगवान है, ब्रह्मा जी है हमारे, ठीक है। फर्स्ट, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट करेक्टर ए डाला तो दैट मीन्स दैट द पैटर्न शुड स्टार्ट फ्रॉम ए एंड दैट टू कैपिटल ए, एंड परसेंट के बाद मतलब आफ्टर ए एवरीथिंग इज फाइन. Okay, so that's why we are using percent to identify the other, just to give just to give a smaller pattern from the entire word. Okay, so this will give me all the columns, all the rows where the name starts with A. तो इसमें क्या output होगा? हमारे पास अर्पित भी है और अमित भी है. So I'll have two rows now here. So 101 and 103. So ये भी आएगा और ये भी आएगा. कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो लाइक को दोबारा समझाता हूं. देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, लाइक में क्या बोल रहा हूं. सो देर आर सर्टेन वेज आई एम पासिंग द लाइक कमांड. लाइक बेसिकली क्या करता है, हम पैटर्न को पास करते हैं. वी आर पासिंग द पैटर्न ऑन टॉप ऑफ माई लाइक, है ना. सो दैट्स व्हाट इट डज, लाइक इट डज. सो लाइक में सपोज इफ आई एम नॉट यूजिंग परसेंटेज, परसेंट का ऑपरेंट, राइट. सो दैट मीन्स दैट आई एम गिविंग द एग्जैक्ट मैचिंग. ओके, सो आई वॉन्ट द दिस वैल्यू ARPIT, एक बार को मैं हाईलाइटर भी ऑन कर देता हूं यार. Okay, this value ARPIT to be exactly matched with my data. Okay, this is what I want. This, when I'm doing this is what I want. But when I'm using a percent say, I mean that I want the percentage. That means that I only want a certain piece of this to be matched. After this, I'm fine. So suppose I'm writing percent after capital A. That means that the first character should be capital A, and after this, if there is anything, I'm okay with that. Take whatsoever data is there which starts with capital A. Ab similarly, एक और में, just give me a minute. I'm editing this slide again. Just give me a minute. Guys, come on. So you have this updated slide in front of you. Okay. So now here what I'm doing is, instead of passing a percentage baad mein, what I'm doing is I'm doing percentage now both the places. So I'm saying that percent of I and then percent. Can somebody tell me what does this expression means? Exactly, Abhishek. Absolutely correct. So just like we search contacts in phone book, absolutely correct. Yes. इवन इन डिक्शनरी से आप ये ढूंढते हो ना, पहले ए ढूंढते हो, फिर उसके बाद उसका सेकंड कैरेक्टर ढूंढते हो. ओके, सो अनीश सेज आउटपुट नेम्स विच हैव आई इन इट. अनीश का थोड़ा सा मैं अपडेटेड बोलूंगा. नहीं, अमनदीप अनीश को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा. महावीर सही बोल रहे हैं. व्हाट महावीर इज सेइंग, बीच में आई होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो I can be at last, but I has to be mandatorily in the middle. Okay, I last में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, इट्स फाइन, बट मैंडेटरी है कि I बीच में होना ही चाहिए. I के पहले भी कुछ होगा और I के बाद में भी कुछ होगा. Anything between and after, I mean ahead and after I is fine, but there has to be a mandatory I in between the characters. अब सेम, चलो इसी कोड को हम एक बार आपको टेबल पे शो करता हूँ. I'm just copying this code. Just bear with me guys. Just a minute. I'm again editing the slide. Just a minute. Yeah, I hope my slide is visible to you. Can somebody tell me what will be my output of this command on this table? So I have this command, select star from employees where first name like percent I percent. So ये table है मेरा. Just quickly tell me how many rows, how many columns. Quickly guys. Amandeep says whole table.
Mahavir also says whole table. Exactly. Thank you so much, guys. I hope you are able to understand the concept. Now, the reason why it will have whole table, because it has I in between. So it has I in between. So before I we have ARP and at the end I have T. Likewise in this I have ROH and at the end I have T. So I is in between before and the end, right? It's in the middle of your entire name. So there is something preceding and after the character I, right? So that is the reason why it is returning me whole table. Like का concept clear है सबको? परसेंट कैसे यूज करना है, परसेंट स्टार्टिंग में होगा एंड में होगा. चलो सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं. Just bear with me, guys. I am editing the slide. Just a minute. चलो क्विकली. अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. लुक एट द क्वेरी वेरी केयरफुली. ओके, वेरी केयरफुली. टेल मी हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स विल बी रिटर्न्ड हियर. No, Anish, give me the exact answer. How many rows, how many columns? Guys, look at the query carefully. अमनदीप, आप ऑल बोल रहे हो, मुझे ऑल का आंसर जाना है. आप ऑल कैसे बोल रहे हो? अभिनव सेज, अभिनव, सुरेश, पार्था, महती एंड अनीश, वाई एम्प्टी टेबल, प्लीज टेल मी. अभिनव, महावीर, महती, 4 कॉलम्स 1 रो. गाइस, थोड़ा सा मैंने ट्रिकी किया है इसको. मैंने फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम किया. आई होप पीपल आर लुकिंग एट दैट, राइट? एंड दिस इज वेयर वी चेक योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, whether you are alive with me in the class or not. Okay, so it's not first name, it's last name. ठीक है? Yes, अनीश, एग्जैक्टली. रोहित शुक्ला है, लास्ट में ए है हमारे पास. सो आई एम सेइंग द वे लास्ट नेम लाइक ए, राइट? सो लाइक ए है, मतलब परसेंट ए बोला मैंने. परसेंट मतलब पहले कुछ भी हो सकता है, बट एंड में तो ए होना ही चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट. तो इसमें भैया सिर्फ रोहित शुक्ला जी के पास ए है लास्ट में. ठीक है? गुरु साई रेड्डी 101 एंड 103 रोज. अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया. आप ये कैसे बोल रहे हो? I mean, any reason why you're saying this? Please tell me. Abhishek, yes, that's where we check, है ना? So that's where we do that. But again, आपने 2 rows and 4 columns कैसे बोला? I'm still not able to understand that. I mean, 2 rows तो कहीं कहीं से भी नहीं हो रहा है ना. अगर आप फर्स्ट नेम पे भी देखते हो तो फर्स्ट नेम में तो टी है लास्ट में, तो सब जगह एंड हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा. और ये अच्छा, आप ए फर्स्ट का बोल रहे हो क्या यार भाई? देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, परसेंट ए लिखा है. परसेंट तो पहली बात परसेंट पहले में होना चाहिए और ए लास्ट में. मतलब मैं बोल रहा हूँ एंड ए से होना चाहिए यहाँ पे. इसका मतलब ये है. ओके, इट्स नॉट लाइक स्टार्टिंग विद ए. सेम चीज नहीं है अभिषेक, आप स्टिल समझो इसको. अगर आप फर्स्ट नेम में भी देख रहे हो देन ऑल्सो योर लॉजिक इज रॉन्ग. Again, in fact, there is another error also. A is capital. I'm writing A is small. So correct. The casing is also very important. है ना? अगर मैं कैपिटल ए बोलूंगा तभी वो रिटर्न करेगा, स्मॉल ए पे रिटर्न नहीं करेगा. ओके, कोई इशू है किसी को इसमें? कोई मुझसे पूछा था ना सिक्वल केस सेंसिटिव है कि नहीं, तो ये एक एग्जांपल है आपका, सिक्वल केस सेंसिटिव है. या एग्जैक्टली अभिषेक, इट्स केस सेंसिटिव. किसी को कोई इशू है भैया इसमें? कोई भी डाउट प्लीज बता दो. वी कैन टेक इट अगेन, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक बिटवीन एंड लाइक वाइक का इशू क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, है ना? कैन इट बी लाइक परसेंट ए परसेंट बी? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल. आप यू कैन पुट एनी क्राइटेरिया यार. सो बेसिकली यू आर सेइंग कि परसेंट ए होना चाहिए एंड देन उसके बाद कुछ होना चाहिए, देन उसके बाद बी होना चाहिए, देन उसके बाद एंड में कुछ और होना चाहिए. सो बेसिकली ए और बी बीच में होना चाहिए एंड देन ए और बी के बीच में भी कुछ होना चाहिए. सो यू आर सेइंग लाइक दैट, राइट? सो इट कैन बी एनी पैटर्न, यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट?
अरे राहुल, आप बहुत बार पूछ लिया यार, कब तक कंप्लीट हो गया, कब हो जाएगा? अरे ये हो जाएगा राहुल, डो नॉट वरी अबाउट दैट। सो कंप्लीट के पीछे क्यों पड़े हैं हम सीखने के पीछे पड़े हैं ना ऑलवेज। ये तो 3 इडियट्स का डायलॉग है, आपको भी पता है। आप ज्ञान के पीछे भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, यू शुड बी स्किल्ड इनफ, है ना। सो आप हम स्किल सीख रहे हैं इस पे। डो नॉट वरी अबाउट द टाइम। आई एम व्हेन आई एम गिविंग यू टाइम, डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू गेट हैव द टाइम टू लर्न इट, राइट? I mean, even if you're not available for online classes, you can watch the videos, right? So we are trying to learn something. So इसमें टाइम लग सकता है, बट इफ यू वांट मी टू आस्क मी अ क्वेश्चन लाइक इफ आई वांट टू कंप्लीट इट, आई कैन फिनिश इट इन 2 days ऑफ टाइम। ट्रस्ट मी, सीक्वल में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। बट सीक्वल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। So we'll be taking as many questions as we can. We'll be practicing as much as we can. So it's not about कब तक पूरा होगा, अब ये होगा कब तक आप सीख पाओगे। अगर आप 2 दिन में सीख जाओगे तो प्लीज आई एम हैप्पी विद दैट। ये पूछो आप कब तक सीख जाओगे, है ना। कैन यू पुट इंटायर स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर? हाँ जी, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। हमने करा था ना, देखो हमने इंटायर स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पे अर्पित पास किया है ना, इंटायर स्ट्रिंग ही पास कर दिया हमने, कोई परसेंटेज नहीं डाला। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। राहुल सर, नॉलेज नॉलेज के पीछे भागो, टाइमलाइन के पीछे नहीं। बिल्कुल सही बोला भाई अनीश, आपने सही चीज बोला। हम सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न। अगेन आई एम ओके विद द टाइम, व्हेन आई एम गिविंग यू टाइम यू शुड बी हैविंग टाइम टू एटलीस्ट लर्न, राइट? सो इट्स नॉट, इट शुड बी रेसिप्रोकल, correct? So we'll be doing it straightforward. Again, I'm asking you guys, if you want me to cover to finish the SQL, I can do it in 2 days. For me, it's completely fine. क्या होगा, मैं मैराथन क्लास ले लूंगा, 4 घंटे में सब पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ फायदा नहीं होगा उससे, आप कभी नहीं सीख पाओगे उससे सीक्वल। मैंने नहीं सीखा यार, वैसे मुझे पता है कैसे सीखोगे आप सीक्वल। तो सिखाने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको सीखने में टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे सीखोगे कैसे? खत्म करने से क्या होगा? खत्म कर लोगे आप, बैच ले लोगे, सर्टिफिकेट ले लोगे, सीक्वल सीख लिया मैंने अर्पित जैन से, क्या फायदा होगा उसका? कुछ फायदा नहीं होगा। सीख जाओगे तो जॉब लग जाएगी, सीख नहीं पाओगे तो सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है। ये सब मिथ है। कूल यार तन्मय क्या कह रहा है, सर यू विल कवर ऑल कॉन्सेप्ट सर, लाइक टाइप्स ऑफ ज्वाइन। अरे तन्मय भाई, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, विल बी कवरिंग एवरीथिंग। इनफैक्ट नेस्टेड क्वेरीज जो आपने सुना होगा ना, ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें लोग काफी घबराते हैं सीक्वल में। नेस्टेड क्वेरीज, जॉइंस, इनर, लेफ्ट एंड ऑल दैट, राइट? We'll be doing all the exercises, okay? Do not worry about that. I have prepared good exercises and I'll make sure that जो भी हम nested queries करेंगे, वो हर एक बंदा जो हमारे लाइव क्लास में है, वो जब तक ओके नहीं बोलेगा, किसी एक को भी डाउट हुआ, I'll still repeat it. Trust me on that. It's very important, है ना। एग्जैक्टली क्रैश कोर्स में कुछ नहीं रखा होता है भाई। क्रैश कोर्स में वो सब आके आपको वो ज्ञान देके चले जाते हैं, वो टाइम पास होता है। कुछ उसमें कुछ कोई सीखता नहीं है कुछ भी उसमें। यू हैव टू लर्न थिंग्स, राइट? फॉर लर्निंग यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। चलो ठीक है यार, बहुत ज्ञान की बातें होगी, नेक्स्ट करते हैं। सैंपल हमने देख लिया, स्पेशल वेशल पढ़ लिया। अच्छा चलो, ये लाइक का तो क्लियर हो गया पॉइंट, राइट? सो चलो एक बार एडिट करता हूँ वापस, 1 मिनट देना यार मुझे प्लीज। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो क्विकली लाइक का आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक में वी हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट थिंग्स एंड द परसेंटेज आल्सो, है ना। सो विल डू दैट। सो परसेंटेज एंड परसेंटेज को कैसे यूज करना है, बाद में, बीच में, एंड में। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मल्टीपल परसेंटेज ए एंड बी बीच में, सो वी कैन डू दैट एज वेल, है ना। कुछ भी, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल somebody was saying, right? So percentage A, then percentage B, then percentage. What does this mean? So percentage मतलब कुछ भी स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर है, आई एम फाइन विद दैट, बट उसके बाद ए होना चाहिए बीच में, देन अ परसेंट, देन अ बी। सो बेसिकली ए बी भी होना चाहिए बीच में, बट ए और बी के बीच में भी कुछ और होना चाहिए। सो देयर विल बी थर्ड कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर इज फाइन। सो ए बी एंड देन बी के बाद भी परसेंटेज है। सो एनीथिंग आफ्टर बी इज ऑल्सो फाइन, बट देयर हैज टू बी समथिंग आफ्टर बी ऑल्सो, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज लाइक का पैटर्न। इसमें डाउट, अगर किसी को भी समझने में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज आस्क मी दिस। परसेंटेज ए, परसेंटेज बी, परसेंटेज, किसी ने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था ये। if I scroll up I'll find out the name, but again I'm just not scrolling up. किसी ने पूछा था, अच्छा पॉइंट था ये। so we can do that, है ना। so किसी भी तरीके से पैटर्न आप डाल सकते हो। पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है ना यार, आपको पैटर्न फिगर आउट करना है अपने डेटा के लिए। so you can do anything, ठीक है। सिमिलरली नॉट नल, सो हमने यहाँ पे पढ़ा था इज नल पढ़ के, करेक्ट। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज नल। सो इज नल अगेन आपने पता है वन ऑफ द स्पेशल ऑपरेटर्स है। सो इज नल तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, सो बेसिकली जीरो रो रिटर्न हो जाएगा। लाइकवाइज इन आपने पढ़ा है, इन में हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज पास करते हैं। सो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। सो आई हैव in these 3 are meeting the criteria. So I'll have 3 outputs from this. It will not give you an error. Always remember this. It will not give you an error. It will just check whatsoever value are present in this list. It will return that as an output. So output मेरे पास 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, because I'm selecting star. So I'll have 4 columns and 3 rows.
Likewise, I'm selecting, okay, this is a good question, guys. Please tell me what is the output here. Select distinct last name from employees. Okay, Mahavir says good question है यार. क्या है? परसेंट ए, परसेंट बी, परसेंट में. ओके, ए है बीच में आपका. नहीं, मेरे हिसाब से आई एम अभिनव फिल्टर नहीं होना चाहिए इसमें, बिकॉज आप ए और बी के बीच में भी कुछ बोल रहे हो, बट आपके ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं है. सो दिस विल नॉट गेट फिल्टर्ड, अभिनव. ओके, सो पीपल आर आंसरिंग 3 rows and 1 column. सो डिस्टिंक्ट लास्ट नेम. लास्ट नेम क्या था मुझे भी याद नहीं है, सॉरी. ओके, जैन, शुक्ला एंड कुमार. हाँ, बेसिकली तीनों डिस्टिंक्ट ही हैं. सो लास्ट नेम फ्रॉम कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट? सो पीपल आर सेइंग 3 rows and 1 column. Cool, guys. 3 rows and 1 column. Anybody has any other answer? Exactly. The output will be having only 1 column here, guys. Just remember, this is important concept. Again, I'm repeating this. If you are able to visualize your view table, which is your output, you are very good in SQL. If you are not able to visualize your output, आप कभी nested query कभी भी join नहीं सीख पाओगे. That is very important. ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पे 1 ही कॉलम होगा, बिकॉज हमने डिस्टिंक्ट ऑफ लास्ट नेम किया है, तो इसमें आउटपुट में सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा फ्रॉम एम्प्लॉय. सो बेसिकली मैंने क्या करा, डिस्टिंक्ट किया, तीनों डिस्टिंक्ट, तीनों रो रिटर्न होंगे, बट सिंगल कॉलम होगा. 1 कॉलम एंड 3 rows. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. कूल यार, चलो लास्ट है. ठीक है, ग्रुप बाई बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्विकली माई सिक्वल वर्कबेंच पर जंप करेंगे. एग्रीगेशंस क्विकली पढ़ लेते हैं. सो सिंपल है, सेम एग्रीगेशन फंक्शन जो आप हर जगह पढ़ते हो. एवरेज बेसिकली आपका एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना. काउंट, रिटर्न द नंबर्स ऑफ रोज. मैक्स आपका लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है. मिनिमम लोवेस्ट को करता है. सम ऑफ द वैल्यूज करता है. अगेन वेरी वेरी कॉमन फंक्शंस है ना. एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, वेरी सिंपल फंक्शंस. बट अगेन जस्ट रिमेंबर दिस, वी दीज आर यूज क्वाइट ऑफनली, लाइक एवरेज, काउंट एंड ऑल दैट, वी यूज दैट क्वाइट ऑफन, है ना. सो दीज आर द वेरी स्टैंडर्ड फंक्शंस in SQL. So just have a look at this, guys. Any question, please ask me. ठीक है, सो ये एग्रीगेशन के फंक्शन हो गए. सिंपल है, बेसिक क्वेरीज एक बार देख लेते हैं. जैसे सपोज हमने क्या करा, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज. Can somebody tell me how many rows, how many column will return in this? Select average of salary from employees. How many rows, how many columns? Quickly. सेकेंड या थर्ड मैक्स सैलरी कैसे फाइंड करेंगे यार? वो तो आप उसको लिमिट कर दो. लिमिट में आप रैंक भी कर सकते हो. मल्टीपल वेज है, बट थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है. बट अगेन 2-3 वेज आप इसको लिमिट भी कर सकते हो. लिमिट करके आप उसको ऑर्डर करके लिमिट कर सकते हो, एंड देन आप रैंक करके भी निकाल सकते हो. nth कैरेक्टर, nth रैंक, दोनों पॉसिबल. कूल. सो पीपल आर सेइंग 1 वैल्यू 1 कॉलम 1 रो. 1 वैल्यू और 1 कॉलम 1 रो में डिफरेंस है, गाइस. ठीक है, बी वेरी क्लियर. महावीर, उत्कर्ष, 1 वैल्यू या 1 कॉलम 1 रो. अगेन आई एम सेइंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्यू टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना. Always remember this. Anish says 1 value, average value. Okay. Guys, I'm just reiterating this. It will not return 1 value. It will return 1 column and 1 row. Okay. ये SQL है. SQL में हमेशा आप जब क्वेरी रन करते हो तो आप टेबल के हिसाब से बात कर रहे हो, टेबल में बात कर रहे हो. ठीक है. User 3, I don't know what's your name, but again, it's not 1 value. It's 1 row and 1 column. Okay. You were right earlier. I don't know why you shifted to 1 value. 1 रो एंड 1 कॉलम. जब भी हम SQL की बात करेंगे, हम आउटपुट टेबल्स में बात करेंगे. 1 कॉलम 1 रो. ठीक है. व्यू टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस. आई एम स्टिल रिपीटिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. लाइकवाइज काउंट स्टार, मिनिमम सैलरी, मैक्स सैलरी, सम सैलरी, सब में आपके 1 रो 1 कॉलम ही रिटर्न होंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का क्या है, आप जब आप सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज करोगे ना, तो आपका कॉलम का नाम क्या होगा? what will be your column name after running this? So the column name will be avg bracket of salary bracket. So this will be your name of your column, you know that. And likewise, if you don't count star, right,
the name of your the output the view table का column का नाम होगा count bracket star bracket. So this will be your name of your column. Likewise in this minimum of salary, minimum bracket salary bracket. So that will be your name of the column. Okay. So that is the issue when you use these operators, the aggregation functions as your calling criteria. Likewise in the distinct also, you saw the distinct, right? So even the output of this table, the name of the column would be distinct bracket last name bracket. So this will be the name of your output of the table, okay? But the good thing is we can rename this. Okay, so we can rename this using the function as. Okay, so now you can say that select average of salary as salary SAL underscore AVG from employee. So basically we're saying that now rename after calling the function, rename the view table ka column ka naam as sal of underscore AVG. So in their output, again you will be having one row and one column only, but the column ka naam would be salary of salary sal underscore AVG. And likewise, like for count sal, I can give records, minimum sal, I can min underscore sal. Okay, so I can use as an operator here. Right, one row one column कैसे आएंगे sir? I don't know why this is an issue, but again same thing ना. So because देखो अपने ultimately हम value return नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा SQL है, SQL में हमेशा tables में ही हम बात करेंगे rows and columns. Okay, so at the end it is by default, I mean I don't know how can I answer this why. So basically ऐसे ही होता है, it's by default functionality of SQL. Okay, so it will always return you the column header to which you are querying on and then the output of it. So I mean the qualifying rows for this. Okay, so the output will be having one row and the column. So column का name would be by default average underscore bracket में salary, but again you can rename this using the as operator. That is possible as I've told you. किसी को कोई issue है इसमें guys? Please tell me. If नहीं है then I'm gonna jump towards just give me a minute. ओके कूल. महावीर एज के बाद स्ट्रिंग डालेंगे डबल कोट के साथ या विदाउट कोट? ओके ओके, आप विदाउट कोट डालते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्ट्रिंग में यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम मेरे को, अब जैसे एग्जांपल देखो ना, आप एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, आप एम्प्लॉयज़ में स्ट्रिंग डाल, आप कोट्स डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो ना? आप कोट सिर्फ एक पैटर्न में डाले थे यहाँ पे जब आप लाइक ऑपरेंड यूज कर रहे हो, जहाँ पे वो स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है. सो आई मीन जनरली जब आप स्पेसिफाई करते हो ना तब आप ये कोट्स यूज करते हो, अदरवाइज कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे कोट्स की जरूरत नहीं है इन सीक्वल. सो लाइक आपने देखा ना, एम्प्लॉयज भी तुम डायरेक्टली लिख रहे हैं. सो लाइकवाइज आई कैन गिव द नेम ऑल्सो, इट्स फाइन. सो सपोज आप किसी कॉलम को भी कॉल करोगे लाइक लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड ऑल दैट, आई टोल्ड यू राइट, select employee ID, last name, first name and all that. So even that also you're not passing the quotes, you're just writing the name of the column headers, that's it. एवरेज सेल का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा तुम बताओ, क्या मैं आप बताओ पार्थ क्या होगा? सो एवरेज सेल तो बेसिकली क्या है, मैं एवरेज कर रहा हूँ राइट. सो एवरेज ऑफ सैलरी कर रहा हूँ. सो सैलरी क्या है मेरा? सैलरी ये है. सो एवरेज ऑफ 10,000 15,000 एंड 20,000 क्या होगा? आप जल्दी से बताओ, क्विकली बताओ क्या होगा एवरेज? 15,000 होगा बाय डिफॉल्ट राइट. सो एवरेज तो इस तीनों का मीन हो गया, बेसिक तीनों का एवरेज हो गया. So the output will be having the column name will be sal underscore average and the value जो एक रो जो होगा उसका वैल्यू होगा 15,000. So that will be the output, है ना, if you run this code basically. ठीक है, कोई इशू है किसी को? I don't think किसी को इशू होना चाहिए, but again अगर है तो please do let me know, do not hesitate. अभी हम माई SQL वर्कबेंच क्विकली ओपन करते हैं बिकॉज इसके बाद ग्रुप वाइज वगैरह आ जाता है. सो विल टेक ग्रुप वाइज सेपरेटली, है ना. सो ग्रुप वाइज की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, विल टेक ग्रुप वाइज जब वो आएगा बाद में. तो अभी हम माई SQL दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट? अभी माई SQL दिख रहा होगा करेक्ट अभी? ओके cool. So this is your MySQL workbench guys. So आप जब quickly setup करते हो ना अपना, so you always make sure that you set up a local connection like this. Like once you set up, right, so you have a local connection which says like a local instance of MySQL 80 server and then you have a root. So basically your root admin, है ना. So local host पे by default setup हो जाता है वो.
So you have to just, I mean, अगर किसी को कुछ setup करने में कोई doubt हो तो please let me know, है ना? So I mean, it's quite easy. It's quite easy. So you have to set up a local instance of your MySQL server, है ना? And जब आप ये setup करते हो ना, so I'm just double click and open. So it'll ask you for the password. So जब आप setup करोगे तो वो password मांगेगा आपसे. तो always remember this password. If you lose out this password, you have to again do a resetup. So there is no, I would say, way to restore your password. You cannot restore this. Okay, so always remember this password. That's the problem, Abhishek. So that's what I'm saying. So है ना, आपको ये करना पड़ेगा. तो अभी हम एक न्यू क्वेरी कर लेते हैं. आपको ये याद रखना पड़ेगा. So I have prepared some good questions, guys. You can see practice question, right? So I have some good practice questions prepared for you. But we'll do that, है ना? We'll do that likewise. अभी आप जब आप सेटअप करोगे ना, जब when you are done with your MySQL Workbench setup, so वो बेसिकली 3 डेटाबेस आपको बाय डिफॉल्ट देते हैं वो MySQL वाले, ठीक है? They'll give you Sakila, Sys and World. Okay, कंपनी जो है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है. I can give you the schema for this also. I mean, I have the SQL script for this. It's user friendly. I mean, it's quite, I mean, everybody uses that. It's an open source schema. It's not what I have created. I've just used it from online. It's available for everyone. Okay, I can share that with you. So now I have Sakila, Sys and World. Okay, so this is how my environment looks. So you can see this, right? So just be familiar with this environment. So on the left hand side, we have the schemas. You can see the header here, schemas, right? So schemas basically मेरा क्या है? मेरा individual database. आपको दिख रहा होगा एक canister जैसा बना हुआ है यहाँ पे. It's a database, right? How can our own database in GUI, that is Workbench? समझा नहीं क्वेश्चन यार मैं आपका. How can our own database in GUI, that is Workbench? मतलब you want to create your own database, ऐसा बोल रहे हो क्या? So if you want to create a new database also, you can do that. So that's what I'm saying, right? So I have this company, right? So I have created this. So I have run a script. I have a script in front of me. In fact, let me show it to you. I would be having it somewhere. Open SQL script, and then I'll be having it somewhere. Let me open this for you. I don't have it here. I'll show it to you. So I have it. So I mean, I'm not able to open it right now, but I can share. So basically you can create it now. So it should not be wrong. So you can write, I mean, you can you create your own database, like create वाला जो command होगा. So पहले create करोगे and tables create करोगे, multiple tables create करोगे, and then you insert your rows and all that. So that's a one-time job, right? But again, so let's quickly be very familiar with this environment, guys. So left side में you have your databases, है ना? And then you have this screen is basically your navigator. I would say it's more of your SQL writing script. So आप यहाँ पर अपनी queries को लिखते हो, right? आपको दिख रहा होगा SQL file 4. I've just created a new file. So what I did, I just used this tab and I opened this, right? So I'll open the other one, है ना? So ये हमारे I can create a new notepad kind of a thing. So जहाँ पर आप SQL queries को लिख सकते हो. सिंपल है, ठीक है? चलो अब बेसिक चीजें करते हैं. सो अब जैसे फॉर एग्जांपल आई नो आई हैव आई मीन डेटाबेस कॉल्ड Sakila. So Sakila में आपको दिख रहा होगा. So if I just do this, right? So if I just use this drop down menu here, so you have 4 things coming up. So I have tables, I have views, I have stored procedures and I have functions. Okay, so basically मेरा area of interest tables है, because tables को ही मैं infer करूंगा, tables को ही मैं query करूंगा, right? So I'll be using these tables for my query purpose. सिंपल है, किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी इशू नहीं है ना? अब सिंपल कमांड जो हमने पढ़ा है हम सिर्फ वही रन करेंगे आज, ठीक है? जो हमने सेलेक्ट स्टार वगैरह जो भी पढ़ा है ना, हम वही रन करेंगे, उसका आउटपुट चेक करेंगे. अब बेसिक चीजें, सपोज यू हैव मल्टीपल डीबीज, ये मैंने आपको बताया नहीं है. इफ यू हैव मल्टीपल डीबीज, राइट, सो यू आइडियली सेलेक्ट वन ऑफ द डीबीज ऑन विच यू वांट टू रन द कमांड्स ऑन. सो द बेसिक कमांड इज use. That use is the keywords USE, and can you see this? I have written it in a small characters. So I can also write this caps lock USE, or use in small is also fine, because it's the MySQL Workbench environment which is taking care of this. So at the end I have this semicolon. If I run this, so now you can see in the output, use Sakila is the action which was taken. The message is 0 rows affected. There was no output of this. It's just like we have commanded the SQL interpreter to use the Sakila tables, right? So in this, now if I want to see the tables, like, so I have a command like show tables. So if I do this show tables,
it'll give me the list of tables I have under my Sakila. So can you see this now? 23 rows returned in the output. Can you see this? This rows number are very important. Okay, so you'll be able to see. So now basically this is giving me that it has 23 rows by default. Okay, so I mean it has 23 rows. So basically 23 different tables I have under my Sakila database. This is what it means. Okay, and can you see this? Even this output is in the table and the in the rows and the column fashion. Can you see this? The name of my table is tables underscore in underscore Sakila. So it is by default internally have coded it likewise that it will always return the output in the form of this. So it will be tables in Sakila, the name of your table. So likewise, it is coded internally, right? So can you see this? So again, you have an output where you have one column and 23 rows. Okay, Mahavir, अगर आपको issue हो रही है तो what I'll do is I have prepared a document for setup, है ना? आप उसको uninstall कर दो completely. I don't know where you are stuck, so I have to see that. And I'll try to share. I'll try to upload this setup guide in this live description itself. Okay, so I'll ask the IT team to do that. We can execute procedures also, but again, it's not advisable to be honest, Aditya. So we don't normally do that. So we always do it on, so I mean, if you're able to use procedures, so it's purely towards your environment, right? It's purely towards your organization's need. So technically we'll be using, we won't be working on procedures right now on this. So I won't take much questions there because that's not part of the scope of this. But again, we'll be doing mostly on select statements, my DML. But again, to answer your question, we can, but that's not advisable. Okay, so that's what. So I have my show tables here. I have my tables. Ab simple एक basic command बताओ guys. So I have table का name actor है, actor info. This is my table का नाम है ना. Actor is table का नाम. So आपको basic statement क्या पता है? Select पता है ना? Select star from actor. Semicolon. Run करेंगे इसको. So now can you see this? 200 rows returned. So basically I have 200 rows available inside my actor table, and it has how many columns? Actor ID, first name, last name, and last update. So it has 4 columns in this. आप ये सेम चीज आप स्कीमा कैसे देख सकते हो? आप स्कीमा सपोज आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओगे टेबल्स के अंदर में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, टेबल्स में सबसे पहला टेबल का नाम है एक्टर, एंड अगेन देयर इज एरो हियर, राइट? सो इफ यू जस्ट यूज दिस एरो, यू कैन सी दिस कॉलम्स, इंडेक्सेस, फॉरेन कीज एंड ट्रिगर्स. आप सिंपल कॉलम्स को चेक कर लो. सो इन दिस कॉलम्स यू हैव एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड लास्ट अपडेट, राइट? सो बाय हियर आल्सो यू कैन सी दिस. यार जूम आई डोंट नो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको. एक बार मैं लेट मी ट्राई दिस. यार जूम तो यहाँ पे मेरे को मैं तो कर पा रहा हूँ, बट मेरे को आपको अनअकैडमी इस लाइव स्ट्रीम पे नहीं दिखाई देगा. सो इट वोंट अलाउ मी देयर. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. ओके, बट एनीवे, सो आई मीन आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो विल बी एबल टू फाइंड इट, है ना? सो बेसिकली यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा. सो वंस यू डू अ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, वन ऑफ द टेबल्स, राइट? So the only thing is, see again here, this table which is my output is my view table, है ना? There is no relevancy of this table. Okay, so if I run another code, it'll just, the output will go away, है ना? This will go away. So what if I do this? So I have from select star from another table is address, right? So if I run this, so this output which was earlier, it has just gone, and now it has returned another output where it is showing me the columns of my second table, which is address. So under address, you can see there are so many columns here. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I have 9 columns here. So it has returned me 9 columns and 603 rows. Can you see this in the down? So you have an action output ka log here. Okay, so this log is giving me the number of rows. This, you have to just keep on checking this. So this is very important to understand. Okay, so now I'm finding out my address. So basically all the 9 columns and 603 rows. Now, for example, I just run this. Okay,
So what I select, I need the only few particular columns. So I'm doing select address underscore ID, address ID, and then I want say district, and I want say location from address. So this is my what? This is my column ka filtration, right? From address. Now I'm just giving a space here. So where what? Where my say city ID, where city ID is equal to 300, for instance, 300. Cool. Anybody has any issue in understanding this code? So I'm saying that give me the address ID, district, and the location from the table address where the city ID is 300. So I'm saying that the output will by default have how many columns? Now 3 columns, right? So now it will have 3 columns. It should not return me 9 columns. It should return only 3 columns. Now I cannot find out the rows by default, because now in the bigger data I do not know the whole data, right? So that is the reason why I'm using this filtration criteria of 300. So let me run this. So if I just quickly run this, can you see I have the address IDs, district, and location from the data where I have only the where the city ID is matching. So I'll just do right city ID also will be easier to locate actually. So city ID here, and I run this. Can you see this? So now it is returning me 4 rows: address ID, district, location, and only the city ID. 4 rows which I've selected in the beginning, where city ID is 300. Okay, so can you see this? Only 2 rows returned and 4 columns returned. So 4 rows and 2 rows, 4 columns and 2 rows returned. कोई इशू है इसमें गाइस? ये बेसिक सेलेक्ट वेयर जो हमने सीखा, आप कैसे रन करोगे, क्या आउटपुट में दिखता है, कैसे दिखता है. Okay, why people uses MySQL command line rather workbench? यार देखो, अब प्रैक्टिकल में आप पूछूंगा ना, अगर when you are working in an organization, right? So you do not have the flexibility to use workbench every time, because some companies may, because it's an open source tool, right? So few of the times workbench is maybe not allowed, and CLI command line is always easier, right? So command lines में 2-3 reason होते हैं. So because it's always accessible, it's quite easy, user friendly. And workbench as a software might not be accessible to the companies, right? Because there are some licensing issues and all that. So in the organization, when you talk about organization, so people generally prefer writing the same commands on the command line, but rather if you're using on a personal note, so we can use it on workbench. But even in the organization perspective, we can still have another ID like, dbeaver. So there are some other IDs जो सब कुछ support करते हैं, like the common platforms for all the databases like Postgres, Cassandra, MySQL, Oracle, सब support करता है, dbeaver and all that. So community edition भी होता है, enterprise edition भी होता है. Likewise there are many tools है, table plus भी है. So there are many IDEs, so not only command line. So I won't agree with that. But again, generally, even I prefer command line when I work in organization. It's quite easy, and simple हो जाता है. Sir, can column name and table name be same? हाँ जी, बिल्कुल same हो सकता है, कोई issue नहीं है, बिल्कुल same हो सकता है, कोई issue नहीं है, possible. ठीक है. So this is the guys basic look and feel of MySQL workbench. ठीक है. So I'll be planning another session. So we are pretty much done with the time. Okay. I'm also tired. ठीक है. So we'll do that. So अब ऐसा करेंगे, next time से we'll be doing a lot of practice questions. So trust me, I have really good questions prepared for you, and इसी में हम nested queries and all that, and I'll ask you to write the query for me. Okay. So do not worry about that. So I have all the nested thing, joins and all covered in that. Okay, so we'll have a lot of exercises. We'll cover a lot of exercises. And again, next में पहले हम group by भी पढ़ लेंगे. So group by, having, where clause and all that, we'll do that. ठीक है. So that's it for the day, guys. Thank you so much, and I'll plan another session. So I don't have the schedule for it right now, but you'll be getting the live update on the playlist of SQL on the CodeBeyond channel. You'll be getting the live link. Okay. But tomorrow onwards, I'll be going live anyway, so we'll be doing Python for the rest of the week. So I have Python sessions planned 2 p.m. from tomorrow onwards, but for SQL, I'll update you accordingly. Okay, we have a few questions. Can you tell me internally how it works in system? You're talking about MySQL. So MySQL workbench में हमने एक local DB instance create किया ना. So when you do the setup, right?
it'll ask you to create a local DB instance only. So basically your system is having a local DB instance. So in fact, I'll share the setup guide. I understand there will be a few issues in setting up. So with this setup guide now, you'll be able to create a local DB instance, and that's how it is behaving internally on your system. So system में basically DB instance create हो जाता है internally MySQL workbench के through, and that is acting as a DB for you. Okay, महावीर सिंह थोड़ा यार मैं honestly थक गया हूँ. my throat is paining. Trust me, my throat is paining. So it's been almost 2.5 hours, yeah. I mean, come on, it's too much, right? So it's okay, fine. But thank you so much if you guys are really liking it. But there's a limit to everything, you know. So I believe, I hope I'm making myself very clear, right? So guys, because again, the thing is we have to understand what we are learning, okay? So if you won't understand, there's no point of me coming. I mean, if you want me to finish the course, I can do it in 2 days. It'll not make it. Why will I show it to you, these code? Does it make sense? Is it giving me anything? No, right? I can finish the code, the entire course in 2 weeks. Trust me, not more than that. It'll not take more time for me, but that'll not help you guys. So I mean, completing the course is not an issue here. Understanding is what we are looking for, okay? अगर आपको कोई भी doubt हो कहीं पे, then it is the only reason I'm speaking so much. It's not giving me any pain. It's not giving me any joy here, okay? It's giving me pain only while I'm speaking so much. But, right, I mean, if you're able to understand it, that's what I'm looking for. That then everything is worth, right? But again, if आप समझ नहीं पाओगे, then there is no point. Exactly, Abhishek. Interactive classes are the best. If you won't interact, right? यार ये तो आप फिर तो आप मेट्रो में भी रहोगे, ड्राइव करते रहोगे, आप ऑडियो पे लगा दोगे, वो भजन बज रहा है, लोग सुन रहे हैं बैकग्राउंड में. वो पढ़ाई थोड़ी होती है. वो तो कोर्स कंप्लीट करना होता है. उसको पढ़ाई कहते हैं. हम कॉलेज में भी बहुत पढ़ा है हमने. कॉलेज में कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्लास में कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है. क्योंकि हम बात नहीं करते, क्योंकि वी डू नॉट इंटरैक्ट, है ना. हमको लगता है कि वो पागल टीचर आ रहा है, पढ़ा के जा रहा है ना. वैसा नहीं है यहाँ पे. प्लीज डोंट मेक इट लाइक दैट, है ना. Here we are trying to learn something. It's a specific skill which we are learning. So there's no point of me coming here talking and finishing the lectures. There's no point of doing that. यार फिनिश करना होता तो मैं 2 वीक में खत्म कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा हमारा. क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, है ना. जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा. Obviously यार, it's no fun. For me also it's not fun. ना. Why will I be taking interest in teaching someone who is not interacting? मुझे क्या फायदा मिल रहा है उसमें? There's no fun for me, right? So interactive sessions are always good, people. Thank you so much for realizing that. So that is the reason why we are taking it so deep, है ना. So course completion का questions मत पूछो मुझसे please. When I can complete, I can. If you want me to finish it, I can do it in 2 weeks, not more than that. But that will not help you. You know. Hey, thank you so much, Vanna. Thank you so much, Mahavir. Thank you, Abhishek. Thank you, guys. Yeah, I mean trust me, that's how I have learned. Yeah, I am not revealing the name of my friend. So I was doing my master's in US. So that's where I met this friend of mine. And trust me, I had a subject of SQL there, okay? And I was completely zero in SQL. I didn't know even a single word. I did not know how to run select statement. I'm being very honest with you, right? But this guy sat with me for a week, and he was my roommate actually there, okay? And he was such a brilliant guy. And the way he has explained me, right? I am so much confident. उसने जो मुझे पढ़ाया है ना, अब मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ वैसे. I have so much of confidence in me in SQL. Okay, that is what I want to develop in you guys. I want कि इस क्लास के बाद ना आपसे कोई भी पूछे SQL, तो आप बोल सकते हो ये तो अर्पित ने बताया था, अर्पित सर ने बताया था, हमने पढ़ा था लाइव क्लास में, आप आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा आपको. It should be that much clear, है ना. So there's no point of there's no issue in asking your queries while learning, right? But आप पूछोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? मैंने नहीं सीखा बिना पूछे. मैंने तो यार उसको रात भर जगाया है पढ़ने के लिए, बिकॉज मैं जेन्युइनली सीखना चाहता था. मैंने सीखा है और मैंने सीख लिया है, मुझे पता है, मुझे आता है ना. बट अगर आपको सीखना है तो आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना यार, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना. क्रैश कोर्स में 1 घंटे में SQL सीख जाओगे? कोई दवाई है जो आप पी लोगे बीमारी ठीक हो जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है ना. आपको टाइम तो देना पड़ेगा यार, है ना. बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो गाइस ठीक है. अच्छा, लिंक्डइन आईडी यार पोस्ट तो किया है मैंने चैट में, दोबारा पोस्ट कर देता हूँ. चलो, लिंक्डइन आईडी पोस्ट कर दिया मैंने गाइस, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन दिस. फेयर इनफ, आई एम ओके विद दैट. But again guys, I hope everybody is liking this, है ना. So everybody is liking this. If anybody has any other suggestions, guys, anything which you want to talk about, please do let me know, है ना. I can always modify my content. देखो यार, मुझे सब कुछ हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होगा. मैं भी मतलब even I am doing it on my own knowledge, right? हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर दूँ. So do let me know if you want me to add something else, right? So we'll talk about that. I'll, 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 I'll modify my content accordingly, है ना. We can always, it's always possible.
अच्छा शुभू, अपकमिंग क्लासेस आपको मैं बाय डिफॉल्ट बता देता हूँ। मैं दो लेक्चर्स, दो कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, वी आर डूइंग पाइथन एंड सीक्वल। सो पाइथन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अबाउट अ मंथ एंड हाफ अगो। ओके, बेसिक चीज़ें स्टार्ट करिए, बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ लिया हमने। वो उसका एक सेपरेट आपको कोड वर्ड्स अनअकैडमी पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा, अर्पित जैन प्लेलिस्ट करके होगा वहाँ पे। ओके, इवन इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन की वीडियोस में होगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। सो दो डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, पाइथन के अलग हैं, सीक्वल के अलग हैं। पाइथन का मैं स्केड्यूल्स बता देता हूँ आपको। सो पाइथन वी आर डूइंग एवरीडे लाइव 2 p.m. ओके, सो 2 p.m. Monday to Friday we are doing live for Python. SQL, this is was a master class for this weekend, so I have not planned it for the next sessions, but I'll release the schedules as per my availability as well. So we'll do that. आई थिंक यू पुट योर आईडी इन प्राइवेट। यार मुझे तो पता भी नहीं कि प्राइवेट में कैसे करते हैं। ठीक है, आप एक बार, आई डोंट नो। सो लिंक्डइन आईडी तो मैंने शेयर किया है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट विजिबल टू यू गाइस। प्राइवेट मैसेज तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ टू डू इट इन आई मीन इन पब्लिक। सो ये तो पब्लिक ही दिखा रहा है यार मुझे, आई डोंट नो, नॉट श्योर। अच्छा चलो आपको बता देता हूँ, हाउ कैन यू सर्च माय नेम। सो यू कैन सर्च माय नेम अर्पित जैन। ओके, सो अर्पित जैन, आई वर्क फॉर एरिक्सन। सो अर्पित जैन, एरिक्सन, आईआईटी मद्रास, यू विल बी एबल टू फाइंड मी, है ना। सो आई डोंट नो यार, टू बी ऑनेस्ट, आई एम मे बी आई एम नॉट दैट टेक savvy. सो आई डोंट नो, लिंक्स आर ब्लॉक्ड बाय एडमिन। चलो मैं अपने एक बार ना डिटेल्स इसमें टाइप कर देता हूँ क्विकली, जस्ट आई विल टाइप इट फ्रॉम माय फोन, जस्ट अ मिनट। अर्पित जैन, एरिक्सन, आईआईटी एम। Yeah, so just check, just look at this. I don't know if you have got my text. Just copy this text and search it on LinkedIn. You'll find my name. Or I'll post my email ID also. So, channel, ठीक है, चलो ये भी है ना। So I have posted my details in the chat. Please, guys, you can just find me on LinkedIn. I'm always available. Cool. I think ये लिंक्डइन पे ना, आप इवन अनीश आपने भी अगर लिंक पोस्ट किया है तो वो लिंक डिसेबल्ड है। आई थिंक आई जस्ट गॉट टू नो। सो लिंक्स पोस्ट नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। यू जस्ट सेंड सम कैरेक्टर्स और टेक्स्ट, है ना। सो दैट्स द थिंग। कूल गाइस, ठीक है, इट वाज नाइस डिस्कसिंग विद यू ऑल। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच. It was really pleasure talking to you all. Have a great day ahead, and as always, I'll be going live from tomorrow for Python. But again, for SQL, I'll be releasing the schedule really soon. Thank you so much. Bye bye.